describe yourself as an actor in one word. Incredible. I'm still stuck in time. I don't think I've moved over it once. All set तो नहीं कह सकता मैं, because ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कितनी भी तैयारी करो, होना कुछ और ही है. For all film-related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. मैसी साहब, पहले मुझे एक चीज़ बताइए, आपका नंबरों के साथ क्या है यार? 12वीं फेल, 14 फेरे, सेक्टर 36, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 पहेलियाँ. What is the thing with numbers in you? 3 पहेलियाँ? हाँ, ये नहीं थी, चलो तो फिर वो. हाँ, मगर ये नंबरों के साथ क्या है आपका? यार, I don't know. ये मैंने शायद, honestly I tell you one thing, ये पहली बार मुझे आपके जरिए पता चल रहा है. I have never paid attention to it up until now. और एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि सारी फिल्में जो हैं, most of them, I would say nearly 70% of them release on number 9. Interesting. तो आप देखिए, ये 27 अक्टूबर है. इसके पहले जो मेरी भी थी वो किसी 18 तारीख को हुई थी. गैसलाइट वाज आल्सो 18th or something or 9th of something. तो पता नहीं कुछ है, I think. Number 9 is a very lucky number for me also. My screen test happened on 9th. Oh wow. And it's releasing on 9th, 27. और 9 नंबर तो मेरा वैसे ही लकी है. तो मेरे घर का नंबर, मेरी गाड़ियों का नंबर सब 9 ही है. तो है कुछ. तो कुछ है. तो ये है कोई ऊपर बैठ के. Exactly. बोले तारे, you know. But now coming to this film, I know I'm a UPSC fail, which I proudly say. तो एक attempt में ही हम मारे गए थे. But to play a real life character, I know I've heard awesome things from Manoj Kumar about you. How difficult was it to be part of it? Did you speak with him or did you just read the book? I read the book. There was an entire process because it happens to be a Vinod Chopra film. तो पहले किताब दी गई, किताब पढ़ने के लिए समय दिया गया, फिर स्क्रिप्ट दी गई, फिर उसके बाद सारे ऑडिशंस जितने भी हुए हैं, पोस्ट आई केम ऑन बोर्ड, उन सारे ऑडिशंस का मैं हिस्सा था. एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद मनोज सर. उनको संडे छुट्टी मिलती थी. सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड मैम. किताब तो पढ़ ली थी, स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट. समझना था कि जीवन कैसा रहा है, क्या रहा है, विचारधारा क्या है, what is his world view. And the shooting process itself was so challenging, so challenging. The first day of shoot, you wake up in the morning at 4 o'clock, you leave, it's cold, you're wearing a couple of layers of jacket, चंबल में शूट कर रहे हैं. और आप जब वहाँ पहुँचते हैं, आप शूट करना शुरू करते हैं, जैसे ही 8-9 बजते हैं तो तापमान इतना बढ़ जाता है कि 11 बजे तक 40-42 डिग्री हो गया आपका. तो physically, emotionally, this has been the most challenging film of my entire career up until now. And then you have a taskmaster like Vinod Chopra to bring out the best in you. He will squeeze you up until your last drop to bring out the best in you. और अभी थोड़ी देर पहले हम बैठे थे कहीं पे, I'll finish off by saying this कि you know, he is someone who will push you against the wall to such an extent, you'll break, you will probably ask yourself why, but then you walk out not just a better actor but a better person. Awesome. Yeah. And I can say that this is actually your debut vehicle. 100%, yes. So what was it like? And it's a tough one, and you also have a resonance, as we discussed, with your character, because, so what was it like getting, and also it's a real life character because you also will bring your own perception. So what was that like? Incredible, absolutely. This, like you said, it's my big debut. It's absolutely a dream come true. And like he said, Vidhu sir is not, he's a genius, right? He's an absolute genius. We all know it's not easy to please him. He has certain standards and he has certain expectations from his actors, light people, camera people, and you have to reach that standard in terms of your performance. So this has been challenging. Like for him, it's been emotionally and physically challenging, but for my character, it was very emotionally demanding. And on top of that, it's also, there is another pressure that it's based on a real person. So you have to do justice to that woman who's so incredible. I've had the opportunity to meet her so many times. I would call her up, ma'am, can I meet you? Ma'am, I have something to discuss. I have this scene to discuss. And I would meet her and I would ask her multiple questions. We've sat for like 4, 5, 6 hours at stretch. And
I would take notes just to understand what her इतने सारे perspectives नोट्स are थे like. मुझे पता है इनकी स्क्रिप्ट पे इतने नोट्स होते थे मेरे पूरी स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता था पूरे हर जगह लिखा हुआ रहता था It was like sitting for a UPSC for exam. Almost. PSC preparation only, ma'am. Since I've been in Bombay, it's been a preparation only. Up and now मेरा result आ रहा है boards का. It feels like that. वो भी 12th 12th फेल का 12th pass, रिजल्ट 12th pass. जिस दिन फिल्म मिली थी विदु सर ने अप्रूव किया मतलब मैं पास हो चुकी हो हूँ चुके थे the picture का नाम ही incidentally 12th. Do not worry about that. सो उनसे बहुत मुलाकात हुई है बहुत और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि जब भी मैं और श्रद्धा मैम मिलते थे हमको रियलाइज होता है हमारे अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो मतलब लाइक आई एम सेइंग दिस विद utmost humility because I'm not even close to how incredible she is but for some reason we would talk and it would be like oh यार सेम पर्सपेक्टिव ऑन द सेम थिंग सेम डिसीजंस ऑन द सेम थिंग एंड ये हम खुद डिस्कस करते हैं कि विदु सर ने कैसे वो चीज़ देख ली मुझ में इतनी जल्दी मे बी ही सॉ सम सिमिलैरिटी मे बी ऑफ कोर्स ही सॉ माय परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग बट इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एंड आई ट्रूली फील सो ब्लेस्ड most importantly because somebody like Vidhu Vinod Chopra has shown unshakable faith in me since the first time I screen tested with Vikrant. It was 9th of February, like I said, 9th is a good date for me. That was the first time I was meeting Vikrant and Vidhu sir and the entire team for my screen test and the screen test went well and then I was told that there'll be a photo shoot and then there'll be more tests and then 13th of May is when I got to know that I am doing the part. सारे dates दे सकते every day. It's been a magical experience for me, ma'am. Awesome. So, yeah. Awesome. But for you, playing a real character, I mean, did you also make notes? Did you speak with Manoj? Did you like try course, to get and also then translating word to screen? What was your method? Because you also do bring a touch of Vikrant Massey to it. Of course. Does, yeah. And you can't take that away because you really cannot disconnect yourself. Yeah. You know, there definitely is going to be a part of you. वही शक्ल है, वही सब कुछ है. But what also happened in this particular film is that इतना भयंकर resonance था ना, relatability इतनी थी कि and when you see this film or when you just focus on my part, the beauty is that of course it is based on someone. On a real life story, it is based on Manoj Kumar Sharma ji, but there is a lot of Vinod Chopra in this film. There is a lot of me in this film. There is of course Manoj Chopra ji hain, Manoj Sharma ji. There is a bit of every average, hard-working, spirited Indian in this film, and all of us have gone through the same grind. True. You know me personally. Yeah. We know each other for years now. Yeah. तो जब किताब पढ़ी स्क्रिप्ट पढ़ी तैयारी शुरू की और जब विनोद सर को मैंने पर्सनली जाना तो ऐसी जो वर्ल्ड व्यू है जो हम फील करते हैं वो बहुत सिमिलर है तो देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई जस्ट कुड रिलेट टू एवरीथिंग दैट्स हैपेंड विद मी इन माय लाइफ एक छोटा सा एक एनेक्डोट शेयर करूंगा रिजल्ट का एक सीक्वेंस था जो हम शूट कर रहे थे जब रिजल्ट आना होता है एंड ये भी थी मेरे साथ और भी जो हमारी इनक्रेडिबल एंसेम्बल है वो सब थे साथ में एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग कट हो चुका था पर वो कट होने के बाद इतने ग्रेसफुली विनोद सर ने पूरी यूनिट ने मुझे ना लाइट जा रही है वहां पे 500 जूनियर्स खड़े हैं पर मुझे 5-7 मिनट रोने के लिए दिया उन्होंने शी वाज राइट नेक्स्ट टू मी शी हेल्ड माय हैंड एंड शी सैट नेक्स्ट टू मी क्वाइटली शी वाज रबिंग माय बैक बिकॉज़ वो होता है वो ऐसा कोई इंसिडेंट लाइक आई मीन दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू व्हेन वाज दैट मोमेंट व्हेन यू एक्चुअली हैड टू टेल योरसेल्फ मैं हार नहीं मानूंगा I think you tell that to yourself every day, even today. एक बाहर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक्टर है ये है वो है सक्सेसफुल है फलाना ढिमकाना बट देन यू स्लीप विथ योर सेल्फ यू वेक अप विथ योर सेल्फ एंड देर आर मोमेंट्स व्हेन यू डू सेल्फ डाउट यू प्रॉब्ली रिकैलिब्रेट ऑन अ डे टू डे बेसिस और वो खुद आप रोज अपने आप को कहते हैं यू नो हार नहीं मारूंगा एंड आई थिंक वो जो संघर्ष है वो तो आजीवन चलता रहता है कभी नहीं रुकता आई डोंट थिंक पैसा सक्सेस और रिकग्निशन सॉर्ट ऑफ टेक्स दैट अवे फ्रॉम यू वरना मतलब मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं होती वो रोज स्ट्रगल तो आपकी लगी हुई है बट फॉर समवन हु डज नॉट लाइक जैसे करते हैं लाइक बोथ ऑफ यू आई वुड से लाइक एक्टिवली ऑन सोशल मीडिया ज़्यादा सोशल मीडिया में आप नहीं करते हो यू लाइक यू कम विद योर फिल्म्स एंड आल्सो योर चॉइस इज वेरी इक्लेक्टिक यू नो हाउ डू यू मैनेज टू लाइक होल्ड योर ओन इन दिस सर्कस दैट यू आर इन आई डोंट नो एक्चुअली इतना सोचते नहीं है मतलब मैं एटलीस्ट अपना बता सकता हूँ इतना सोचता नहीं हूँ मैं
कि ये फिल्म करूंगा तो इसका क्या होगा, इसका बिजनेस कैसे होगा, लोग कैसे देखेंगे, वो कैसे लोग देखेंगे. करते हैं आपकी इंडस्ट्री में कैलकुलेशन चलता आई डोंट थिंक इट कम्स नेचुरली टू मी. एक तो वैसे ही मुझे लगता है कि दिन के 24 घंटे बड़े कम है, तो 12-15 घंटे तो काम ही कर रहे होते हैं, उसमें से 4-5 घंटे सोते हैं, बाकी थोड़ा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और थोड़ी स्क्रीन कैमरे के सामने जाने की तैयारी करते हैं. अब इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और इतना सोचने का बैंडविड्थ नहीं है और नेचुरली नहीं आता. पूजा जी, इट डज नॉट कम नेचुरली कि ये अगर करूंगा तो इसका ये क्या होगा. इट इज नॉट अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ना कि इसका रिटर्न इतना आना चाहिए. यू गो आउट देयर, यू डू योर बिट. और अगर लाइक इन माय करियर देयर आर सो मेनी फिल्म्स व्हिच हैवंट वर्कड, बट इट्स ओके, इट डजंट वर्क एंड देन यू सिट बैक एंड यू नो सॉर्ट ऑफ लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट कि हाँ ये इसलिए नहीं चली, क्यों, देन यू लर्न फ्रॉम इट, देन यू मूव फॉरवर्ड. बट व्हेन यू आर एट इट, आप ये सब नहीं सोच सकते. वो फिर वो बहुत ही करप्टेड प्रोसेस हो जाता है. I can't go on set thinking कि अच्छा अगर इसको ऐसा करूंगा या अगर ऐसा लुक दूंगा तो वो वायरल हो जाएगा. I can't do that. What about you? It's such a crowded space with debuts happening, some from the industry, some not. It's like such में यही scenario है वैसे. 100%, yes. It's not been. It's like, you know, I've been in Bombay since 2017. 2018 is when I started auditioning, and so it's been almost 6 years now. It's like, I mean, struggle is a big word because you know, whatever your struggle has been, somebody has it worse. Yeah. So I don't really like to speak about that too much, but you know your struggle. I know how much self-doubt you have to fight with every single day, countless rejections and all of that. Of course, it's a process and it shapes you into who you are as a person. And I really would like to mention, like you said, you mentioned social media. I have refrained from giving into it for some reason. I'll tell you. में जो दिखता है वो बिकता है. Exactly. So because I have walked out of auditions where they have asked me how many followers you have, because it's like, I want to be an actor that will follow, you know, and it's just so you have to fight all of those things because to maintain that purity of an actor, of an artist. I feel you here because हमको भी interview ना वो influencer को चाहिए भैया. That's another story. But I know time is up. We are all. Where's your fun session? Fun session. I'm coming to. Lovely. पहले congratulations. A new face. That's Papa. How does that feel? All set for diaper duty. यार ऑल सेट तो नहीं कह सकता मैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप कितनी भी तैयारी करो होना कुछ और ही है. तो वो ऑन योर फीट अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट आई फील. तो प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ फॉर द मदर एंड द बेबी टू बी हेल्थी एंड फाइन. जब होगा तब देख लेंगे, कर लेंगे. नेचर टेक्स इट्स ओन कोर्स यार. I have to add, he's already there. There was another fan जिनका इतना छोटा सा बेबी था, and the way he was cradling, I was like, listen, I was talking to his manager, he's already there. I am very good with kids actually. So चलो. I'm naturally good with kids. हाँ. And now to आपका 12th का कोई 12th पास हो या फेल? नहीं पास हुआ था मैं. 13 में फेल हुआ था. फर्स्ट ईयर सीनियर कॉलेज में फेल हुआ था, बीए में फेल हुआ था सीनियर कॉलेज में. एग्जाम ही नहीं दिया. क्यों? टाइम ही नहीं था, शूट कर रहे थे. एग्जाम के लिए बॉम्बे में आ ही नहीं पाए वापस टाइम पे. कर लो बात. रिपीट करना पड़ा. फिर प्रिंसिपल के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़े क्योंकि केटी भी लगी. फिर जब सेकंड ईयर पहुंचे तो वो केटी भी साथ में चली 2 सब्जेक्ट्स की. फिर वो 14वीं का भी एग्जाम दे रहे हैं, 13वीं के भी 2 पेपर दे रहे हैं और शूट भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं. तो अच्छा है ना, एक्टर बन के 12th फेल क्या, आईएएस ऑफिसर भी बन गए यार. क्या चाहिए. ओके, इन अ हैशटैग डिस्क्राइब योरसेल्फ. बेस्ट हैशटैग. रेजिलिएंट. यू? honest. ओके, डिस्क्राइब योरसेल्फ एज एन एक्टर इन वन वर्ड. Incredible. No, sorry, I'm sorry, please, I'm just kidding. As an actor, observant. What about you? Tell all those people, even those who may have rejected you in auditions. बोल दो. Oh, you'll watch. That's not. Exactly. Vidhu sir believes in you, there's something about you. I truly feel that. That I like the girl's confidence. A bit of Massey has rubbed onto her. Who's one actor whose talent you admire more than most? Envy. You're envious. Envy? Envy is No, envy is too negative a negative thing. word. Or you admire, let's say. Admire. Admire the most. I'm still stuck in time. I don't think I've moved over it, Fansab. Yeah. वो था उनमें कुछ बात थी. I haven't moved over him. I don't think I look up to anybody more than him. आप बताओ. I know your mom regards you as
The Aishwarya. No, that is the wrong thing. That's the wrong thing. That's okay. It's a wrong thing. Yeah, No, but somebody whose talent I really admire is has to be Alia Bhatt. I think with the kind of commercial films also that she does, she's really really good. Your guilty pleasure. यार ये सवाल जब भी पूछता है ना मुझसे कोई तो मुझे जवाब ही नहीं होता खाना याद आता है मुझे. खाना? या watching reality shows. What kind of reality? Roadies you're watching? मैं नाम नहीं ले सकता मैं. अच्छा वो वाले शो जो मतलब सब एक दूसरे को मार रहे हैं. Cringe. वो मुझसे नहीं देखा जाए. I know the show is talking. Yeah. Thank you so much. If you like this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.